हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट डायरेक्शन सेंस टेस्ट. I will also explain you about the signs of shadow. So without wasting your time, let's get started. As you all can see that today's topic is direction sense test. So now I'm going to teach you about directions. You must have studied in SST also and in science also, and on the world map or on the map of India, you can find these directions. So this line is not straight, so please ignore this. So I am going to teach you about directions. So how are the directions located? How many directions are there? We all know that there are four directions. This direction is which direction? North direction. This direction is which direction? South. This one is east direction and this one is west direction. So how many directions are there in total? There are four directions. Now from these four directions we can also find there are sub directions also. इनकी भी सब डायरेक्शंस हैं, सब कैटेगरीज जिसे कहा जा सकता है. द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, इसको क्या कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट. क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ ईस्ट. द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, इट विल बी नॉर्थ वेस्ट. इसको क्या बोला जाएगा? नॉर्थ वेस्ट. द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट विल बी साउथ वेस्ट डायरेक्शन. Now the direction between south and east is southeast direction. Right students? So now we have four directions and all the four directions have one subcategories between them, and I have explained you that also. So now we know the concepts of direction. This is north, this is south, this is east and this is west. Now tell me from which direction the sun rises. The sun rises in the direction of east. And from which direction the sun sets? The sun sets in the direction of west. यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा? इस डायरेक्शन में सनसेट है and in this direction the sun rises. From here I will explain you the concept of shadow also. So students, please listen to me carefully in order to understand it easily. अब आपको मैंने डायरेक्शंस के बारे में बता दिया. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द शैडो. देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ शैडो, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. फर्स्टली आई विल रब दिस. नाउ स्टूडेंट्स, एट व्हेन देयर इज अ टाइम ऑफ सनसेट, जब सनसेट का समय होता है, द शैडो इज इन ईस्ट if the person is standing towards the north. and जैसे कि आपका देखिए सनराइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है, तो आप लोगों को इस चीज़ को अच्छे से समझना होगा. तो जब एट द टाइम ऑफ सनराइज द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इन द वेस्ट. जैसे कि जब आपका कौन सा टाइम है? सनराइज. सन कहाँ से निकलता है आपका? ईस्ट से. तो जब भी सनराइज होगा तो आपकी शैडो की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी शैडो की डायरेक्शन होगी वेस्ट में. किस डायरेक्शन में होगी? वेस्ट में. पर जब सनसेट होगा, व्हेन द टाइम देयर विल बी सनसेट, तो सनसेट किस डायरेक्शन में होता है? द सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन. तो एट दैट टाइम योर शैडो विल बी इन द ईस्ट डायरेक्शन. आपकी शैडो कहाँ पर होगी? द शैडो विल बी इन द ईस्ट डायरेक्शन. जब आपका सनराइज होगा तो शैडो वेस्ट में होगी, जब सनसेट होगा तो शैडो ईस्ट में होगी. ईस्ट का वेस्ट एंड देन वेस्ट का ईस्ट. नाउ इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि ये क्या है आपका? दिस नॉर्थ साइड, और कोई आपका पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, वन मैन इज स्टैंडिंग ओवर हियर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. तो जब वो नॉर्थ को फेस करेगा और उस समय जो टाइम होगा वो टाइम होगा सनराइज का. सनराइज किस डायरेक्शन में होता है? ईस्ट डायरेक्शन में. दैट मीन्स सन यहाँ पे राइज हो चुका है. सो द इन दिस वे द सन रेज विल फॉल ऑन द पर्सन. तो शैडो किस तरफ होगी? शैडो पर ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में होगी. ऑन विच साइड? लेफ्ट साइड. दैट मीन्स वेस्ट. और
जब सनसेट होगा द सेम कॉन्सेप्ट गोज ऑन, व्हेन देयर विल बी अ टाइम ऑफ सनसेट एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, वो नॉर्थ को फेस करके खड़ा है तो उसकी शैडो जो होगी वो उसके राइट साइड में होगी. विच साइड? राइट साइड. दैट मीन्स द शैडो विल बी इन ईस्ट डायरेक्शन. दैट इज द सेम थिंग विच आई हैव एक्सप्लेन. जब आपका सनराइज होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो वेस्ट में होगी, जब सनसेट होगा तो ऑब्जेक्ट की शैडो ईस्ट में होगी. और जब आपका सनराइज का टाइम होगा, अगर आप नॉर्थ को फेस करके खड़े हैं तो आपकी शैडो जो होगी वो वेस्ट में होगी. बट एट द टाइम ऑफ सनसेट इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, योर शैडो विल बी इन द east direction, that is in the right direction. Now I have explained you the concept. On the basis of this concept I am going to solve some questions. कुछ questions solve करूँगी which will make the picture more clear. I know this topic is not from your course but I just wanted to change because daily आपका 6 days maths का period daily होता है. आप लोग maths पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाते हैं, so I wanted to teach you something interesting. Maths is also interesting subject, but this is also interesting. So I am going to solve question number 1 for you. Shyam travels 7 kilometer towards north. अब आपको क्या करना है? You have to make a road map. What you have to do? You have to make a road map. जैसे जैसे questions में बोला जाता है उसी के steps को follow करते करते you have to make a road map. So Shyam travels 7 kilometer north. तो which direction is north? This direction is north. तो श्याम ने, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जो आपका मिडिल पॉइंट होगा दैट विल ऑलवेज बी द स्टार्टिंग पॉइंट. सो श्याम ट्रैवल्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. मान लीजिए यहाँ तक 7 किलोमीटर हो गया. नाउ देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स. अब वो किस डायरेक्शन में टर्न हुआ? राइट. अब यहाँ से श्याम का राइट क्या होगा? दिस साइड और दिस साइड. सो दिस इज द राइट साइड. So he turns right and walks 3 kilometers. अब वो 3 kilometers चला. Now again he turns right and walks 7 kilometer. अब आप यहाँ पे खड़े हैं. So which direction is the right direction? This one or this one? This direction is the right direction. अब वो इसका यहाँ का right देखा जाएगा. From here you have to check the right. So from here the right side is this side. So on the right he has again walked towards 7 kilometer. Now we have to tell me in which direction Shyam is from his starting position. तो ये starting position से किस direction में Shyam? Which direction is this? We all know that north, south, east, west. So Shyam is in east direction. Which direction? East direction. Okay students. Now I am going to explain you one more question. So please pay attention. I think that will be helpful for you. Dinesh walks 6 kilometers west. अब आप सबसे पहले रोड मैप बनाएंगे. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड देन वेस्ट. Now this will be the starting point. Now Dinesh travels 6 kilometers west. उसने 6 kilometers west travel किया. Now after that what he have done? Then he turns right and walks 8 kilometer. अब यहाँ से दिनेश का राइट क्या होगा? This direction or this direction? The right side will be this direction. So he has walked 8 kilometers towards his right. कितना चला है? 8 kilometers towards his right. Then he turns left and walks 9 kilometers. अब यहाँ से वो left turn हो रहा है. So which side is left? This one or this one? We all know that this is right and this is left. तो वो अपने लेफ्ट में कितना चला है? 9 किलोमीटर्स. हाउ मच ही हैज वॉक्ड? 9 किलोमीटर्स. नाउ इन विच डायरेक्शन इज दिनेश फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन? उसके स्टार्टिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग वो किस डायरेक्शन में है? तो आप जब चेक करेंगे दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन और आप जब यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, सो इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है. अगर आप ऐसे देखेंगे नॉर्मली, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो दिनेश इज इन वेस्ट डायरेक्शन. अगर स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से पूछा है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज नॉर्थ वेस्ट. सो दिनेश इज इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पोजिशन. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये दो क्वेश्चन डायरेक्शन के हो गए.
Now I will explain you two questions based on shadow concept. जो मैंने आपको shadow के बारे में बताया था. If Hema's shadow is on her right side, like for example this is Hema. Now the shadow of Hema is on the right side at the time of sunset. क्या टाइम हो रहा है? सनसेट हो रहा है. सनसेट कहाँ से होता है? वेस्ट डायरेक्शन से होता है. तो एट द टाइम ऑफ सनसेट द शैडो ऑफ हेमा इज ऑन राइट साइड. हेमा की शैडो कहाँ पे है? राइट साइड में है. सो इन विच डायरेक्शन हेमा इज फेसिंग? किस डायरेक्शन की तरफ हेमा फेस कर रही है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हेमा विल फेस टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. इन विच डायरेक्शन? North direction. So this is the right answer. Now I will explain you one more question on the basis of this. So please listen to me carefully, students. Rahul is facing towards north. Rahul is facing towards north and it is a time of sunrise. Sunrise का टाइम है और राहुल ने नॉर्थ की तरफ फेस किया है. So in which direction his shadow will be? So as I have explained you the shadows concept, when there is a time of sunrise, the shadow will be in the direction opposite to it, that is in west direction. और कौन सी साइड होगी? राइट साइड और लेफ्ट साइड? The shadow will be in the left side of Rahul. So students, this was direction sense concept for you. And I hope you all have understood this well, and I am also giving you some multiple choice questions of your exercise so you can solve them. For class 7th I am not giving any homework today. You just watch this video and try to learn the concept. Class 5 and class 6 I will be giving you some homework, so you have to do that. And yes, if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon. Okay students, thank you. Subscribe the channel and press the bell icon.